ओके, प्रैक्टिस करते हैं। ड्राइंग पे देखिए यहाँ पे इसका आइसोमेट्रिक व्यू है एंड देन टॉप व्यू यहाँ पे गिवन है, और जो इसका सेक्शन व्यू है कि जब इसको आप यहाँ से कट करेंगे तो आफ्टर कट व्यू आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो उसकी लेंथ है यहाँ पे 120 एंड दिस इज 50, और यहाँ पे रेडियस है 5 की, एंड देयर इज ए होल हैविंग डायमीटर 10। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं इसको। मैं सॉलिडवर्क्स स्क्रीन पर आता हूँ। यहाँ पे हम स्केच और मैं इसमें लूँगा टॉप प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे सेंटर रेक्टेंगल, और यू कैन आल्सो चूज द कॉर्नर रेक्टेंगल ऑफ 2। ठीक है, नाउ सेलेक्टेड। ओके, राइट क्लिक एंड टेक स्मार्ट डायमेंशन, स्पेसिफाई द डायमेंशन विच इज 120 and this is 50. Okay, now take fillet and specify the radius 5 and select the whole rectangle. Okay, and take circle and draw the circle. Okay, right click and specify the dimension which is 10 diameter. Now take a smart dimension and specify the distance from x and y direction. Okay, and from here this is 10. Now this is also 10. Okay, then again select the circle and hold the control key and select the circle, make the relation equal. Now take a smart dimension and specify the dimensions which is 10, and this dimension, this is also 10. Now select the center and add the relation. This is vertical. Okay, now this is horizontal, and again this is vertical, and this again horizontal. Now okay, then again right click and Extruded Boss base and selected contour and delete it, and the base having 20 width. Okay, and now okay, so I hope कि clear हुआ हो ये आपको। ठीक है, then again right click on it and then sketch, and now यहाँ से प्लेन चूज कर लीजिए, वाइट प्लेन वाइट। ओके, देखिए यहाँ पे जो डायमीटर इसमें जो गिवन है टोटल, इसमें इसका यहाँ पे जो डायमीटर है वो आपका 10 रेडियस एंड देन 15 रेडियस। ओके, 10 एंड 15 रेडियस, यानी कि 20 एंड देन 30 डायमीटर पे आपको एक स्लॉट ड्रॉ करना है, सेंटर स्लॉट। यहाँ पे लेंगे स्लॉट एंड देन सेंटर स्लॉट के, और मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट अगेन, ठीक है, राइट क्लिक एंड टेक स्मार्ट डायमेंशन एंड स्पेसिफाई दिस लेंथ विच इज 50. Okay, now specify this 15 radius and this is 10 radius. Okay, then right click Extruded Boss base and selected contour and delete it. Now specify the, okay, एक मिनट, selected Extruded Boss base and Boss base में मुझे यहाँ पे selected and contour deleted. Okay, now so this is also 20. Okay, this is also 20, oh sorry, which is 25. Now okay, and then yeah, so clear हुआ होगी आपको। नेक्स्ट इसमें जो रेडियस है वो रेडियस हमें देनी है, और यहाँ पे 5 की रेडियस यहाँ पे गिवन है। फिलेट एंड देन फीचर्स एंड फिलेट, और यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए 5 एंड सेलेक्ट द बेस ऑफ द स्लॉट। ओके, नाउ ओके, सो हियर इट इज, मॉडल हमारा बन गया है। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे एंड राइट क्लिक एंड अपीयरेंस, एंड you can also specify a color. Okay, मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। हाँ, ठीक है, then file and then save the model. Okay,
सेव द मॉडल। नेक्स्ट फाइल एंड ड्राफ्टिंग करेंगे इसकी, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, ब्राउज, सेलेक्ट स्टैंडर्ड शीट और यू कैन चूज फ्रॉम द ऑप्शन। ओके, ड्राइंग एंड मॉडल, लेफ्ट क्लिक ऑन इट एंड प्रीव्यू यहाँ से ऑन रखिए। इसमें आपको इशू होगा, मैं यहाँ पे टॉप व्यू यहाँ पे शो करता हूँ इसका, एंड देन देखिए इसमें टॉप व्यू के बाद से एंड देन ये व्यू और इसके जो व्यू हैं बाकी के इस पोर्शन में, आइसोमेट्रिक व्यू को मैं यहाँ पे दूंगा इसमें, ठीक है। तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू है वो यहाँ पे, ठीक, और लेंगे इसको शेडेड विथ एज, शेडेड विथ एज, या राइट क्लिक नाउ, ओके, ठीक है। देन अगेन एनोटेशन डायमेंशंस लगाएंगे, एनोटेशन मॉडल आइटम एंड देन यहाँ पे सोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए इंटायर मॉडल एंड देन ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए जो डायमेंशंस हमने लगाई हैं वो सभी डायमेंशंस यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। तो बस हमें यही चाहिए था, इसमें डायमेंशंस प्रॉपर शो हो, ओके। एंड दिस इज 20 एंड this is 5 radius and this is 25, okay। so I hope कि क्लियर हुआ हो ये आपको, ठीक है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें। लास्ट पार्ट इसमें बचता है हमारे पास फाइल एंड देन सेव एज टाइप में यहाँ चूज कीजिए एडोबी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF, ठीक है, एंड देन ओके। ये PDF जनरेट कर देगा एंड देन प्रिंट इट। थैंक यू।